What's up? बढ़िया 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 भाई, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। लेकिन क्या मैच हुआ यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मैच हुआ, मजा ही आ गया। मतलब वसीम जिसका जाफर वेट ने कर बोला रहे कि थे। जिसका वेट कर रहे थे यार, मतलब बहुत टाइम से। Finally, Vignesh and me are here and no, will not be talking a lot of shit about England cricket, I guess. इस वाले पॉडकास्ट में नॉट सो हम मच, थोड़ा कम। थोड़ा कम। So yeah guys, welcome back to the Sports Republic और स्वागत है आपका The Ashes में, The Ashes podcast में। What delivery! Oh, he's got it! What a catch! What a catch! What an unbelievable! In any league, in any land in the world. Okay guys, so yeah, Vignesh, like we talked about, what a great test match we had, what a great last day we Yes. had, or especially I think you will definitely relate to me on this क्योंकि जो चार players चार innings में बेहतर खेले हैं, we all sort of back them. We'll start with Usman Khwaja in the first inning. True, Uh, true. trademark Usman Khwaja inning. Secondly, Correct. वो statement inning. Then we also talked about Bairstow, and Bairstow performed for England again. England. So yeah, we had Bairstow, we had Usman Khwaja, we had Bairstow. We didn't have enough of Usman Khwaja, so Usman Khwaja came again in the second innings. So Usman Khwaja again double, matlab 200s in two innings. And last day, what a fantastic day! Or Ben Stokes finally coming on, playing his Yes. shots, playing his cricket, and yeah, let's talk about it. Vignesh will start with you, of course. क्या बोलता है, क्या मस्त मजा आया आज के दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर जो है, टेस्ट क्रिकेट इज थिएटर यार, अनलाइक व्हाट थिएट्रिक्स जो हम लोग T20 में देखते हैं। वनडे तो शायद भूल ही गए हैं काफी टाइम से, वर्ल्ड कप कुछ नजदीक है नहीं। सो इट इज टेस्ट क्रिकेट हु इज लिविंग अप टू द बिलिंग, एंड पता नहीं ऑल द नॉइसेस अबाउट टेस्ट क्रिकेट, इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है। यू पिक आउट एनी टेस्ट मैच दिस ईयर, अभी तक छोटे डिस्टेंस में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया, मतलब वी वर सरप्राइज्ड एट सेंचुरियन एंड नाउ दिस। सो दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट और अ सीरीज वेयर जहाँ पे बहुत सारे मैचेस हैं, इट टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ द टीम, एंड इंग्लैंड showed character today, to be very honest. Matlab, we were not expecting them to, but they showed great grit. And then Johnny Bairstow, for all his white ball exploits, has never really been taken seriously as a test player. But here, right in this podcast, आपको links भी मिलेंगे. We spoke about how Johnny Bairstow can be the X factor that England are missing, and he stood up. और आपको याद है जब हम सेकेंड टेस्ट प्रीव्यू कर रहे थे तो हमको लगा कि यार हम लोग पे हंसेंगे बिकॉज ऑफ ट्रेविस हेड, बट उस्मान ख्वाजा ने हमारी वो इज्जत भी बचाई. He showed what we were talking about when we were talking about him. So that is what Test cricket is all about. The beauty of Test cricket and long live. अगर यही ऐसा कैरेक्टर इंग्लैंड शायद पहले दो टेस्ट में और दिखा था तो यार it would have been a great Ashes. But for now, let's cherish what Let's cherish what we have, and let's talk about. You rightly mentioned Usman Khwaja. What a fantastic player! और बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है, एंड इट्स क्लियर कि कुछ तो लफड़ा है पक्का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से या फिर जस्टिन लैंगर से. आई जस्ट डोंट गेट इट. लेकिन उस्मान ख्वाजा को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो उसको मतलब इंटरनेशनल सर्किट पे मिलना चाहिए. उतना चांसेस उसको एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट. ही हैज एन एवरेज ऑफ व्हाट 90 के आसपास का एवरेज है एज एन ओपनर फॉर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में अभी तो नंबर 5 पर आया. उस्मान ख्वाजा यार, क्या लगता है, क्या गलत हुआ हो, क्या गलत होगा, या फिर इट्स जस्ट दैट कि कोच को वो पर्टिकुलर प्लेयर पे बिलीफ नहीं है बार बार प्रूव करने के बाद भी. And at times it is also about being at the right place at the right time. Maybe Khwaja was not necessarily in the right place at the right time. But having said that, jitna kuch bhi hua, for a player to come back and perform the level he did, maybe shayad this might also be in the last throw of dice in uske international career mein. But he took it, and how. And मैं मतलब काफी सारे articles and stuff I was reading about Khwaja, that how is such an inspiration without even significantly playing for Australia. He has
mentored the likes of Marnus Labuschagne, Cameron Green. He talks so highly about it. The players basically in the Australian setup are very happy whenever Khwaja gets a chance and does well. जहाँ तक शायद लैंगर और उसका इक्वेशन था, I don't necessarily believe कि शायद वैसा हो. Just because Australian cricket is they did not have great victories जिसके ऊपर वो ऐसे टीम बिल्ड कर सके या फोर्स एक बन सके, तो इन सब के कारण ऐसे ऐसे एक जो स्पेशल प्लेयर्स हैं उनका ना खेलना शायद और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है एज कंपेयर्ड टू ऑस्ट्रेलिया बीइंग इन द डोमिनेंट टीम, तो फर्क पड़ता. बट अगर ख्वाजा डजंट गेट टू प्ले द फिफ्थ टेस्ट तो which he actually indicated कि मुझे पता नहीं मैं पांचवा टेस्ट खेलूंगा या नहीं खेलूंगा. So we really don't know because again he came as a replacement for what Travis said. Travis said he was not performing, but if he comes back, someone has to go out and someone will be Usman Khwaja, I guess. But I don't know how. I mean, again, Usman Khwaja को मैं 2 सेंचुरी के बाद back to back centuries के बाद नहीं देखूंगा तो I don't know what's wrong. I mean, come on. Let's talk about Bairstow. Bairstow यार हमने पहले भी Bairstow के बारे में बात किया है इस पॉडकास्ट के ऊपर और we rate him very very highly. But I think, do you think कि Bairstow, इस टाइम के Bairstow अगर तुम रीबिल्ड कर रहे हो तुम्हारी टीम, अगेन जो तुमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो इन्वेस्ट किया था, अगेन you had your Bairstow, you had your Stokes, Josh Butler, they are the ones who are performing for you, right? Again, जॉर्ज बटलर ने एक इनिंग खेला, बेयरस्टो ने खेला, स्टोक्स आज खेल रहा है, लेकिन आई मीन ठीक है स्टोक्स पिछले इसमें नहीं खेला हो, लेकिन स्टोक इज दैट क्वालिटी प्लेयर. डू यू थिंक दैट if you have invested so much on white ball cricket, do you think rather going out for something हसीब हमीद जैसे मुझे ऐसा लगता है हसीब हमीद इज जस्ट आज भी जैसे बॉल पे आउट हुआ है, एक ही सेम बॉल पर आउट होता है, इज नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. अगर तुमने व्हाइट बॉल में ही इन्वेस्ट किया है तो व्हाई नॉट जस्ट यूज दोज प्लेयर्स ओनली? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली. जब हासिब हमीद इंडिया में 2016 में खेला था, ही लुक्ड अ प्रॉपर टेस्ट प्लेयर यार. मतलब ही वाज 19 आई गेस बैक देन, बट ही लुक्ड अ टेस्ट प्लेयर. और शायद आप ये लेवल पे आके यही देखते हो कि डज दैट पर्सन बिलोंग. हासिब हमीद करंटली डजंट लुक लाइक अ प्लेयर ही बिलोंग्स. मतलब वन आउट बाउंड्री यहाँ वहाँ, उसके बाद ही इज अ वॉकिंग विकेट. जैक क्रॉली हमें हमेशा लगता था कि ही स्कोर स्टाइलिश रन्स, फास्ट मतलब उसकी खेलने की आदत है, ही गेट्स द बाउंड्रीज. तो शायद जैक क्रॉली फ्रॉम दिस इनिंग्स इज अ टेक अवे फॉर इंग्लैंड फ्रॉम द सीरीज. but उनकी ओपनिंग आफ्टर सर एलिस्टर कुक्स रिटायरमेंट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो दे हैव टू फिल दैट गैप एंड रोरी बर्न्स और हसीब हमीद आर नॉट दी ऑप्शंस. सिमिलरली विद डेविड मलान भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता है, डिस्पाइट he had a brief kind of scores. That's what makes a test player or any player special, right? जब आपकी टीम जो है they are back in the series. I mean they're quite back in the series, but Bairstow made it count by scoring a century. That is what a special player is all about, right? जब आपको मौका मिला आपने सेंचुरी बनाई and you drive your team home at least to safety if not winning. तो England needs to identify those players. और आपने सही कहा, जब उनकी अगर आप white ball lineup देखो, there is match winner from number 1 to number 11, but उनकी test match team there are few fillers जो उनको हटा के शायद they have to again go with that mindset of picking those match winners across conditions. Yeah. Again, आज तो डेविड मलान का विकेट भी मुझे इतना खराब लगा. That was not a great ball from Nathan Lyon. Had no clue के सामने खेले पीछे खेले, just played it for the sake of playing it. There was a हाँ मतलब ओवरऑल डेविड मलान मतलब तुम्हारी ये पूरे लाइनअप में डेविड मलान has an edge, so he's there. Played a few knocks, so he's there, of course. But you talked about number 1 to number 11, the most experienced number 11, James Anderson, और वो एक final over and that frame of test cricket जहाँ पर तुम्हारे इर्द गिर्द सारे players लगे हुए हैं. Stokes is on the boundary, सोच रहा है कि जिमी एंडरसन कैसे तो ये मतलब ओवर निकाल ले. How was that, क्योंकि इनके जैक लीच ने भी आई गेस जैक लीच स्कोर्ड सम रन्स, राइट? 26 runs, 34 balls. Broad was there for 35 balls and James Anderson was there for 6 balls and what great 6 balls.
Absolutely. ये अगर आप मतलब if you're a follower of test cricket, you get this beauty, right? You count overs at the start of the day, और जैसे ही 1 घंटा बचता है, then there is a mandatory 15 overs. Yeah. जो शायद मतलब the people who are watching it feels new for them. वहाँ पे drinks हो रही है, then you feel you are running out of time. And cut to 3 overs, you say कि आप pace नहीं डाल सकते, you have to bowl spin. तो people will ask क्यों पे ऐसे क्यों है? क्योंकि ball दिखता नहीं है. Then And you then have the man Steve Smith rolling his arm over, and what was that? he That actually was took a something wicket else. after 2016. Whoa, 2016 के बाद में आज विकेट लिया उसने. wow, That's wow. yeah. Great. तो उससे मतलब और बेहतर ऐसे हो नहीं सकता if you know he would have picked Anderson as well. Sydney would have gone berserk. But due credit to Anderson and Broad. मतलब जिस हिसाब से उन लोग ने bowling से हमेशा मतलब इंग्लैंड को alive रखा है बहुत सारे सीरीज में. They kept them alive in this game. Huge credit, and test cricket at the end of it 1 year, to be very honest. Yeah, Absolutely, yeah. Loved it. And we have been cribbing about the Ashes for all the test matches so far, and we were not really hopeful. If you have seen our last podcast, we were definitely not told. हमने तो 2-3 दिन के बारे में बात कर लिया था, मैंने और विघ्नेश ने. लेकिन me and Vignesh and everyone who loves cricket likes to be कि अगर हाँ चलो हमारा प्रेडिक्शन गलत भी हुआ तो भी चलता है, बट क्रिकेट में मजा आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड लास्ट टेस्ट ब्रो, क्या बोलता है अभी लास्ट टेस्ट के बारे में? है क्या कुछ? If England somehow managed to turn this around into a win, तो जो रूट एज अ कैप्टन मतलब he will not only survive the captaincy acts, but शायद उसके बारे में मतलब there will be things written about him कि how he rallied and all that kind of stuff, and it will be good for world cricket यार if England manages to win that game. तो ना सिर्फ उनके लिए but for world cricket to notice कि यार people can do well away as well, तो बहुत जरूरी है. There are not very good touring teams, even though Bangladesh also created history, but that would be some win. Yeah, 2013 के बाद almost a decade, England needs to get a win under their belt. It would only be fair. Exactly. Or you actually you mentioned about Joe Root as well. Ricky Ponting said कि Ben Stokes को अभी कैप्टनसी लेना चाहिए. What do you think about it? Do you think Ben Stokes मतलब? But Ben Stokes right now doesn't look the Stokes that he was say a couple of seasons ago, जब मतलब he was the Ben Stokes and stuff. But I'm not sure whether he's interested in taking up the captaincy as well. Root always seemed a reluctant captain to me. England would not want to have another captain like him, जिसको शायद मेरे को captaincy नहीं चाहिए, but मुझे करना पड़ रहा है stuff. But then you don't have options, to be honest. आप किसको बनाओगे captain? किसको बनाओगे? Exactly, and that's where the Root comes, and वहाँ पे कुछ ऑप्शन बचता नहीं है रूट के सामने. और बेन स्टोक्स जैसे तुमने बोला, मुझे भी ऐसा लगता नहीं कि बेन स्टोक्स इज रियली इंटरेस्टेड. मतलब he's somehow finding his place back. He was going through some mental health issues as well, so he's coming back. I don't think he's ready as well as to be as a captain. और उनके अलावा जो बाकी के जो लेजेंड्स है वो तो ऑलरेडी जाने पर है, मतलब 2 ही बचे हैं, ब्रॉड और एंडरसन, एंड दे आल्सो प्ले ऑन एंड ऑफ. तो आई रियली डोंट थिंक सो कि और कोई वहां पर बन सकता है. या मतलब इट्स द एशेस पॉडकास्ट, बट न्यूजीलैंड का स्कोर भी हम बता दें बिफोर, मतलब आपके पास ये वीडियो पहुंचने के पहले दूसरा दिन हो रहा होगा, लेकिन फर्स्ट डे 349 for 1. क्या बदला लिया है रे क्या बदला लेना शुरू किया है, बहुत ही टॉम लैथम. एंड जी आपने उनका वो ट्रैप देखा, आपने शेयर भी किया था राइट? पिच का इट हैड कंप्लीट ग्रास कवरिंग ऑन इट्स टॉप, तो बांग्लादेश वर फोर्स्ड टू काइंड ऑफ विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट, और निकला एकदम बेल्टर निकला वो. तो न्यूजीलैंड मतलब खेल गया, अच्छे से खेल गया, एंड 349 विद द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट. इससे और मतलब आप क्या चाहते हो? क्या ही चाहते हैं. बट यार अगेन लाइक वी आर नॉट डिमीनिंग बांग्लादेश हियर, क्योंकि तुम T20 क्रिकेट के बारे में बोल सकते हो कि यू हैव 5-6 गुड ओवर्स एंड यू हैव द गेम, बट टेस्ट क्रिकेट में आपको जीतना है, और जीतना है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट ड्रॉइंग द टेस्ट एज वेल. अगर आपको जीतना है तो यू हैव टू प्ले all the days, all the sessions. We have seen matches जहाँ पर एक सेशन ने आपके पूरे मैच का मतलब पूरा मतलब चेहरा बदल दिया. But Bangladesh gets that credit. But let's coming back to the Ashes and last
Prediction for the Ashes, Vignesh. It We was were counting 5-0, but it's now 3-0 right now. One match to go. Right. Do you think it's going to be 4-0, 3-1, or 3-0? Last year when a team managed to draw a test in Sydney, they went on to win the next game. But not so sure whether it will happen. If it doesn't happen, if England loses, then ये जो पूरा SCG का उनका marathon effort था, that will go in waste, and that is not a nice thing to happen. Yeah, exactly. I'd hope England have those legs, to win. I'm banking on England 3-1 कह रहा है. Nice. हमको हमारा ही एक्चुअली पॉडकास्ट चलाना चाहिए. हमको ही मजा आएगा. विघ्नेश, हम जो पहले तीन टेस्ट के बारे में बाद में जो बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू ट्रस्टिंग ऑन इंग्लैंड टू विन, एंड लाइक यू रियली पॉइंटेड आउट वेल कि अगर आप अगले टेस्ट मैच में ये परफॉर्मेंस कैरी नहीं करते हो, तो ये टेस्ट मैच का परफॉर्मेंस जिसके बारे में आपकी तारीफ हो रही है, वो शायद थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा. तो उसके हिसाब से ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉ, एटलीस्ट अ ड्रॉ फ्रॉम इंग्लैंड्स एफर्ट्स, एंड but I'll be really happy if Vignesh ka prediction sahi aata hai. So I'm also rooting for 3-1, but I'm predicting 3-0. Nice. So yeah, that's going to be interesting, right? Last Ashes podcast. So yeah, guys, thank you so much. If you guys like this video, please hit the like button और सब्सक्राइब कीजिए द स्पोर्ट्स रिपब्लिक को. हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत रेगुलरली और सारे स्पोर्ट्स का अपडेट आपको मिलता है. और विघ्नेश, यू वांट टू से समथिंग? एब्सोल्युटली, डू वॉच. अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद है तो these are the people, and there are many other people who are bringing out quality content. We are the people, I mean. We are the yeah, people. You are like we are the people. Yeah. जी. तो क्वालिटी कंटेंट फॉर ऑल स्पोर्ट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. ये चैनल सब्सक्राइब करो, चिल करो, वीडियोस देखो, हैव अ गुड लाइफ. चिल करो, वीडियोस देखो, स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज हमको वापस तकलीफ में मत लाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.